हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता एंड आई एम कंसल्टेंट फीटल मेडिसिन। तो जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एवरीडे अल्ट्रासाउंड बिकम्स इम्पॉर्टेंट। एक फाइंडिंग कैन चेंज द सिनेरियो 360 degrees, right? So what we did is this कि one case was being referred to us at 25 weeks, right? And we identified some finding, and therefore that single finding really changed the scenario 360 degrees, right? तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ. So this is the one case that we are seeing. So we are seeing a double bubble. So this is the stomach and then the first part of the duodenum. So ये double bubble है left epigastric region में, right? And then we can identify the communication in between these two bubbles. So this is a double bubble. Okay. So once this is a double bubble, this is suspected duodenal atresia. Duodenal atresia has got very high risk of something around 33%, 35% to have an aneuploidy, that is a Down syndrome in the background. Right. So what we can see is this, that these two findings are persistent. They had been persistent for the for the whole course, and therefore we have asked them to come back again. So this becomes a very strong suspicion for an aneuploidy, but thanks heavens we did the MNU and it turned out to be normal. So this was the case who was being referred to us because of the single umbilical artery. ठीक है, बेबी के यूरिनरी ब्लैडर के दोनों तरफ अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट्स फीटस से माँ को लेके जाती है, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर फाइंडिंग द फीटस वाज बीइंग रेफर्ड टू अस. दिस डबल बबल के लिए ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि 20 हफ्ते के नीचे ये जो फाइंडिंग है वो आपको दिखाई दे. तो ऐसा नहीं है कि दैट समबडी हैज़ मिस्ड ऑन दिस डबल बबल एंड प्रोबब्ली वी आर मेकिंग दिस डायग्नोसिस. ऐसा भी हो सकता है दैट दिस डायग्नोसिस वाज नॉट देयर. पहला. दूसरा, दिस डबल बबल हैज़ टू बी परसिस्टेंट. वी नीड टू हैव appreciate and we have to document the communication between these two bubbles which we could identify in all the examinations that we did for the fetus. पहला. दूसरा, ये वैस्कुलर इंसल्ट भी हो सकती है. तो जैसे सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी के साथ में एसोसिएटेड हो सकती है. मेरे खुद के एक्सपीरियंस में एक कोरोनिक विलस सैम्पलिंग के साथ में वी हैव आइडेंटिफाइड ए डबल बबल and this could be a vascular insult happening at the junction of the first and second part of the duodenum and therefore presenting as a duodenal atresia, right? लेकिन चूंकि डबल बबल है तो एन्यूप्लॉइडी होने की या डाउन सिंड्रोम में भी होने की रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाती है. एक यही ऑफ दिस डबल बबल कैन हैव दिस डाउन सिंड्रोम या एन्यूप्लॉइडी इन द बैकग्राउंड. सो एमनियोसेंटेसिस इन्वेजिव टेस्टिंग इज मैंडेटरीली being done so as to identify, to do the confirmatory testing so as to rule the Down syndrome out, right? So meaning thereby a single finding of identifying any abnormality, as a matter of fact, in double bubble in this case, can change the scenario. Now we are dealing with double bubble at 25 weeks. So there is a time involved, whether this finding was being missed in the earlier ultrasounds and how this is appearing at this time, why it is being associated with the single umbilical artery. So there are a lot of things across. There are a lot of questions being asked and therefore they need to be answered. And but thanks heavens that this report turned out to be normal. Okay, thank you very much for your patient listening.